Hello everyone. So today we have a new problem which name is least number of unique integers after k removals. Leetcode 1481 problem. So as you can see, it's a medium level problem, but I will say it's a very easy level problem. So let's read the problem statement. So given an array of integers ARR and the integer k, find the least number of unique integers after removing exactly k elements. So we have to remove exactly elements, and we have to find the minimum number of unique elements after removing k elements. So let's take an example first, which is a 554 and k equals to 1. Means we have to remove one element in this array. So that I can get the minimum number of unique elements. So कैसे इसको minimum number of unique elements बनाएंगे, देखते हैं चलो. Here 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है. और 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 टाइम. तो 4 is coming only 1 time, 5 is coming only 2 time. Okay, so if I remove 4, so I have a only number which is 5, which is occurring 2 times, but that is the unique number. So number of unique elements is 1. If I remove 4, okay, only 5 will be there, but occurrence will be 2 of 5. The occurrence of the 5 will be 2, but only number of unique elements is 1. If I remove 5, if मान लो मैं रिमूव कर रहा हूँ 5 को, ठीक है, तब मेरे पास 5 की अकरेंस कितनी बच जाएगी, एक बार, क्योंकि एक रिमूव तो मैंने कर दिया, ठीक है. 5 की अकरेंस एक बच जाएगी और 4 की अकरेंस एक बच जाएगी, बट द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, कितने यूनिक एलिमेंट है, ठीक है, हमें काउंट नहीं कर रहे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बट द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स कितने रहेंगे उसके, इसमें दो बच जाएंगे, 4 और 5. हालांकि दोनों की अकरेंस 1 हो जाएगी, बट द यूनिक एलिमेंट्स दो बच जाएंगे, जो कि हमें तो मिनिमम नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स चाहिए. तो हम किसको रिमूव करेंगे, 4 को रिमूव करेंगे. आफ्टर रिमूविंग 4, द occurrence of 4 will be 0 and the occurrence of 5 will be 2, but the unique number of integers in this array will be 1. So 1 will be our answer after removing 4. So let's take an example second. So let's go on the approach part for this. Yeah, here we have given this array and k equals to 3, means we can remove 3 elements from this array, sorry. So what we will do is we will count the number of the we will count the frequency of each element. So 1 is occurring 2 times, as you can see. 2 is occurring only 1 time, 3 is occurring only 3 times, and 4 is occurring 1 time. Okay, so मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो इनकी फ्रीक्वेंसी है ना, जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये इसका एक एरे बनाएंगे. लाइक फ्रीक्वेंसी एरे क्या हो जाएगा, 2131, ठीक है. ये एरे में डाल दिया मैंने, वेक्टर में मान लो, कुछ में भी डाल दिया. आफ्टर सॉर्टिंग हम सॉर्ट करेंगे. आफ्टर सॉर्टिंग वो व्हाट वी विल गेट इज 1123. ये फ्रीक्वेंसी है, ना कि एलिमेंट्स, वो इंटीजर्स हैं जो हमारे एरे के एलिमेंट्स है, वो नहीं है. ये फ्रीक्वेंसी है 1123. अब मेरे को सिंपल यार, मैं कैसे कह सकता हूँ, मेरे को तो नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स फाइंड करने ना. तो हम अकरेंस जो भी है, अकरेंस मोस्टली अकरेंस जीरो हो जाए मेरी, तो अच्छा है वो, ठीक है. अगर मैं वन को रिमूव कर दूंगा यहाँ से, तो मेरा के तो 2 हो जाएगा, बट वन की अकरेंस फिर भी 1 रहेगी. तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले है ना, मिनिमम जो अकरेंस है ना उनको हटा दूंगा. जैसे इसे 2 इज अकरिंग ओनली 1 टाइम, सो इसको है ना 1 को माइनस कर दूंगा. तो ये 2 इज अकरिंग, नाउ 2 इज अकरिंग 0 टाइम्स. ओके, सो के इक्वल्स टू 2. here as same as 4 is occurring only 1 time. so इसको वन, जो एक बार कैरेक्टर आ रहा है, 4 इंटीजर, सॉरी, जो एक बार इंटीजर आ रहा है उसको हटा देंगे. तो 4 नाउ 4 is occurring 0 time. Okay, and 2 is occurring only 0 time. So now k equals to 1, because as you can see in my final uh, occurrence array, like 1123, these are my occurrences. तो इसमें occurrence कैसे हटाएंगे, सबसे पहले 1 आ रहा है, 1 को एक बार हटाएंगे, 0 बच गया, k इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है. नाउ फिर 1 आ रहा है, इसको -1 करेंगे, 0 हो गया, k इक्वल टू 1 हो गया. अब 2 और 3 में से किसी को भी हटा दो, क्योंकि 2 और 3 दोनों की फ्रीक्वेंसी, अगर किसी को भी हटाएंगे, लाइक मैंने 2 को हटा दिया, 2 को हटा दिया, यहाँ पर कितना आ गया, एक 2 को हटाया, मतलब यहाँ तो 2 है ना, 2, इसको -1 करेंगे, 1 आ गया. और ये 3 का 3 रहेगा, क्योंकि के इक्वल टू 0 हो चुका है, ठीक है. हम 3 एलिमेंट्स ही हटा सकते थे उसमें से, जो हमने 3 एलिमेंट्स हटा दिए. तो अब मेरा कैसे बन गया, 0013. 13 is by occurrence is, it means 2 is occurring, like this yeah, 1 is occurring 1 time, and 3 is occurring 3 times. Okay, now unique number of elements कितने हो गए, 1 and 2. 2 will be the unique number of elements, क्योंकि जो b dot size है ना, फाइनली जो b वेक्टर, ये वाला वेक्टर है,
इसका साइज जो होगा वो मेरा आंसर होगा फाइनली. So unique number of occurrences elements are 2. So this was the approach. So now let's do the code for this. So for coding part, what will we do is we'll create a unordered map of int comma int type. Why I am creating unordered map? Because I have to store the frequencies of each character. So I'll apply a loop for int type equals to 0 to I less than arr dot size, then I plus plus, and now I will store the frequency of each element. So how we will store? Map of arr of I plus plus. Now I have stored the frequencies of each character. So let's initialize the size also. Int n equals to arr dot size. Now I have initialized the size also. Now what I will do is I have a frequency array. No, I have stored the frequencies of each character. Now what I will do is I will create a vector int b. Now what I will do is I will store the frequencies of each character in vector. So how I will store? For auto it belongs to map and b dot pushback of it dot second. Why it dot second? Because it dot second is showing the frequencies of each character. Okay. So now we have done this part. Now what I will do is now I have the frequency array like this 2131. यहाँ तक हम step कर चुके हैं 2131 तक. Now what I will do is I'll sort this array. So how I will sort? Sort of b dot begin comma b dot end. So now I have sorted this array. Now my array is 1123. Like if I take the example, now my array will be 1123. Now what I will do is I will apply a loop. I will traverse the whole vector. So how I will traverse? For auto it belongs to b. Okay. I will traverse the vector. Now I will check if k is less than equals to actually sorry I is less than equals to k. If this condition holds, now what I'll do, I will initialize size also for sorry answer also for long answer equals to initially b dot size, because whatever will be the size of my array vector, sorry, that will be our answer. So long answer equals to b dot size. Now what I will do is I'll decrease the k, sorry, k minus equals to it. Yeah, दिस आइटेटर लाइक इसको आईटी बोल रहा हूँ. ठीक है, और आई विल डिक्रीज ऑल्सो द साइज ऑल्सो. ठीक है, जो आंसर है मेरा. एंड इन एल्स केस व्हाट आई विल डू इज आई विल ब्रेक दिस. If this condition not holds, if it is greater than iterator is greater than k, then in that case k is less than 0 means k is 0. So I will break that. And finally what I will do, I will return the answer also. So now let's run this code and see if this will work out or not. Yeah, it is working perfect. Let's submit this. Yeah, it is working perfect. So now let's discuss about time and space complexity for this solution. So as you can see, we are taking a space of vector. We are creating an order map, and somehow we are storing the elements of array in map also. So the time complexity will be big of n, and the space complexity will be big of n log n plus big of n, because we are sorting here, as you can see. So for sorting purpose, the time complexity will be big of n log n, and we are traversing the whole vector arr. Actually I am talking about array, एंड वेक्टर तो लिया ही है, उसको भी ट्रेवर्स कर रहे हैं. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एरे. वी आर ट्रेवर्सिंग द होल एरे. वी आर स्टोरिंग, sorry, yeah, we are traversing the array, and we are storing the each character, each element in map. And also we are applying also a loop which is going from which is denoting the occurrences of each element. Okay, so the time complexity will be big of n log n plus big of n, and the space complexity will be big of n, because we are using a vector space and all.
and build an order map also. So this was the complete solution. If you find this helpful, then please like, share, and subscribe.